continuous live updates coming in from the ground there as the fifth phase of polling currently which is underway across 45 constituencies in West Bengal. Straight away going across to Rima now, who's been reporting live since morning when the voting procedure began. Rima, अभी क्या तक के जो हालात है उनके बारे में बताइए, क्योंकि अभी तक 1 or 2 incidents of violence till now that has been reported. 3 घंटे हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए. 3 घंटे में जो बड़ी घटना निकलकर सामने आई है वो ये है कि मदन मित्रा और जो सुरक्षा बल है उनमें थोड़ी सी बहस हो गई है। उनका कहना है कि सुरक्षा बल हमें रोक रहे हैं, तो अभी तक ये स्थिति है। और पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं तो कमरहाटी में इस वक्त में अलग अलग जगहों पे सिचुएशन ठीक है, लेकिन टीएमसी के नेता के पहुंचने से जो माहौल थोड़ा सा खराब हुआ था, उसके बाद उनकी शिकायत ये है कि अब हम सीधे सीधे चुनाव आयोग के पास पहुँचेंगे और हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि हमारे राइट्स को हमें नहीं दिया जा रहा है, यानी हमें हमारे डेमोक्रेटिक राइट को रोका जा रहा है, हमें बूथ पे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये उनकी शिकायत है। लेकिन और जगहों की मैं बात करूं तो अभी तक मतलब 10 बजे तक सिचुएशन बहुत ठीक है। कुछ बहुत बड़ी घटना की खबर नहीं निकलकर सामने आई है। कहीं आपसी झड़प या बूथ कैप्चरिंग करना या समूह बनाना, भीड़ इकट्ठा करना, इस तरीके की कोई खबर अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। मेरी कोशिश बार बार यही है कि मैं अलग अलग जगहों पर जाके, मैं राजरहाट से शुरुआत करी थी और राजरहाट के बाद कमरहाटी जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट है मदन मित्रा की वजह से, यहाँ के सिचुएशन के बारे में देख रही हूँ कि आखिर यहाँ पे क्या कुछ किया जा रहा है। तो प्रोटोकॉल्स जो कोविड को लेकर है उसे भी फुलफिल किया जा रहा है। 4 फेज से अगर हम कंपेयर करें तो पहले के मुकाबले सिचुएशन थोड़ा ठीक है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हाँ, देश में हालात बहुत खराब है, चुनाव आयोग की सख्ती भी काम आ रही है। लेकिन इस बीच जो पश्चिम बंगाल की जो स्ट्रैटेजी पार्टियों की रही है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े करना या शिकायत करना या आपस में भिड़ जाना, वो एक बार फिर से दोहराई जा रही है और वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम अपने व्यूवर्स को कहेंगे कि जो चौथा फेज था, जिसकी एकदम भयावह तस्वीर निकलकर सामने आई थी, शीतलकुची की घटना हुई थी, वैसी स्थिति इस बार नहीं है। 853 टुकड़ियां सुरक्षा बलों की तैनात की गई है। और जिस जिले में इस वक्त मैं हूं, यानी उत्तर 24 परगना, वहां सेंसिटिव माना जा रहा है और सेंसिटिव मानने की वजह से इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती। सिर्फ मैं आपको बताऊं अमिता कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे नहीं, बल्कि अगर मैं इस रास्ते से कहीं गुजर रही हूं तो हर 10 कदम पे, हर 100 मीटर की दूरी पे हमें देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा बल तैनात है यहाँ पे, चाहे वो राज्य सुरक्षा बल हो या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल हो। सबकी तैनाती, सबकी मौजूदगी है ताकि कहीं भी किसी तरीके की घटना ना हो, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी है निष्पक्ष तरीके से चुनाव करना, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करना। निष्पक्ष शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ममता बनर्जी बार बार चुनाव आयोग पे लगातार हमले करते रहती हैं। चौथे फेज के बाद तो हमने ये तक देखा कि चुनाव आयोग के खिलाफ में वो धरना पे बैठ गई थी। 3 घंटे से ज्यादा वक्त वो धरना पे रही थी क्योंकि 24 घंटे तक उन पे चुनाव प्रचार से बैन किया गया था। ये तक रहा है व्हेन इट कम्स टू टीएमसी, उन्होंने ये डिमांड करी थी कि बाकी जितने फेजेस है उन सबको क्लब कर दिया जाए। एक ही फेज में चाहे 5वां फेज हो, बाकी 3 फेजेस जो बचते हैं सबको एक ही साथ क्लब कर दिया जाए। बट दैट हैज बीन रिजेक्टेड, द डिमांड बाय द टीएमसी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रीमा, बने रहे हमारे साथ। आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ गेस्ट आल्सो जॉइनिंग अस हियर ऑन द ब्रॉडकास्ट। गुड मॉर्निंग टू यू, डॉक्टर निखिल प्रसून, who is the spokesperson of the West Bengal BJP, Shantanu Gupta, who is joining us as a political analyst this morning. Anirban Banerjee also joining us as a political analyst. Good morning to all of you joining us here on the broadcast. But Mr. Prasoon, I would want to go across to you first up as far as the BJP is concerned, because in a short while from now we are expecting that the BJP delegation will be knocking the door of the Election Commission of India, and this is regarding the Sitakuchi tapes. You had, as far as the BJP is concerned, accused that these were the tapes that had the voice allegedly of the Chief Minister of West Bengal, that is Mamata Banerjee. The counter that is also coming from the TMC side, that the BJP has indulged in phone tapping. Namaskar. Actually, जी सर, right the Honorable Chief Minister that led to the violent, scene that was created in Sitakuchi, leading to loss of, 5 lives. So I think the tape substantiates our charge that Honorable Chief Minister was, conspiratorial enough in her intent, as she was
in her constant spree to intimidate as well as to instigate the voters, so that the genuine voters, they could not go to the booth, especially in North Bengal. So because she had already lost substantial ground in North Bengal, that was known to her. So that was something well chalked out strategy on her part, and that was executed on the ground by her lieutenants. But those people who were killed, those people who had to lose their lives, they were gullible, innocent people who were provoked by her. So, in a sense, she is responsible for the death of these people as well. Now she started playing politics, and it got, after the tapes are out, I think it should be clear to all in sundry the way she's asking that, dead bodies should not be handed over to the families, they should not be allowed to be cremated or, buried, and, there should be a rally, taking the, there should be some kind of procession taking the dead bodies there on the road. So, I think this particular thing has well, to be Anirban, taken feel note free of to by come the- in, because these are the counters that are now being put forth by the BJP. They will be knocking the doors of the ECI, something that many times, on many occasions, the TMC has also done. Whether it comes to accusing and blaming the Election Commission of India, they have knocked the doors of the ECI on multiple occasions. But let me also just read out what the BJP Bengal co-in-charge Amit Malviya has just tweeted a short while back while the 5th phase of polling is currently underway. He goes on to say, and I quote, "And the story of deserted TMC booth continue to repeat itself phase after phase." These are some of the pictures there where he has shared on his Twitter timeline, and we are playing that on our screens in Panihati, in Naxalbari Vidhan Sabha, in Jamalpur, and in Kalna. Now, the accusation currently, Anirban, is against the TMC as far as many such incidents that have been reported. And this is not the first time we are talking about in the 5th phase. In the previous phases as well, that people are being stopped deliberately by the TMC workers, the agents there, from letting go and them exercise their franchise. This is not just one-off incident that has been reported, and the latest one came in from North 24 Parganas this morning. No, the first thing is that who is Mr. Amit Malviya? He's a serial fake news disseminator. Therefore, on one hand, he's tweeting pictures of empty polling camps of the TMC, and on the other hand, he's claiming that the TMC people are stopping voters. Both cannot happen at the same time. Therefore, they are getting entangled in their own net. Now, the first question that arises about the audio tape, the so-called audio tape of the CM, is where did Mr. Malviya get this tape from? Is the government of India snooping on the phone calls of an elected chief minister? It is Mr. Amit Malviya who should be taken in custody by the investigative agencies and questioned as to where did he get this Well, tape from. Prasunji, That is the Shantanu, first feel free to question. come in, because so far Anirban has not been able to actually give an explanation of this morning's incident. As far as the BJP polling agent allegedly was threatened and was beaten up by the TMC workers in North 24 Parganas. He's blaming the BJP now indulging in malpractices. Shantanu. See, we have seen how the 4 phases have left. This is typical Mamata Banerjee's politics, that don't counter the political opponents politically, just kill them, threaten them. I think that's her politics, right? And last night in Arnab's show, Anirban has already agreed that this was Mamata Banerjee's voice. He's just finding who snooped. So Anirban, I'm sure you know very well, these days smartphones, the recording app is there in all the smartphones. The 2 people on the call, your MLA might have recorded it by mistake or spontaneously, and might have circulated. And you agreed to that, he's a criminal. Recording apps are very common. Admit that first, Shantanu, admit that first. If you are technically You challenged, agreed that Mr. Amit Shah is a habitual criminal. Anirban, try to hear. I know, difficult for you to hear. I have Try to hear always other point of view. Mr. Amit Malviya's Try to hear other tweets, point these of view, so-called sir. audio tapes, so-called video tapes. Nobody Anirban, trusts yeah. Amit Malviya. That is the Anirban, first my point. name is Shantanu. Can I complete? Anirban. Yes, of course. Recording of apps course. are very common. Consider Recording this. apps are very common on Amit Malviya's trust you quotient understand. is No, but negative. Anirban, doesn't it raise the question actually who leaked that tape if you are admitting that was the voice of Mamata Banerjee? Won't that question arise? Rather than who got that tape? Let me complete. Anirban will allow me. I am not. Shantanu, just a minute. Shantanu, just a minute. I am not admitting. Anirban, can you just allow me to complete? I am not admitting. Anirban. It is Mr. Amit Malviya, the BJP spokesperson,
Why are you chanting Amit Malviya 10 times? Therefore, the onus lies on him in last 10 as minutes. to reveal from where did he Why get the tape. It is Mr. Malviya who has held the press conference. Right. Yeah. Well, he's stuck on the same record, Anirban, because still no explanation that is coming. I'm asking for the third time. When it comes to today's incident of North 24 Parganas, where we can be seen a TMC worker allegedly threatening and pulling by the collar when it comes to a BJP agent who was working there. How would you explain that incident? Not happening for the first time. This is the third time I'm asking you now. 20 seconds. Where is the specific incident? If I can't watch the video, how can I give you an explanation? I don't know where this specific so-called incident took place. Whenever there is an uncomfortable Then you need to watch Republic more often there, because we've already broken the story this morning. Just hold on a second. Arjun Singh of the BJP is with us this morning. Let me also go across to him. Arjun ji, jahan tak agar baat kare BJP ki, we are getting to know that the delegation will shortly be reaching the ECI office. और ये ऑडियो टेप्स का जो काउंटर अब लगाया जा रहा है, टीएमसी की तरफ से उन्होंने कहा है कि फोन टैपिंग का इंसिडेंट है और वो भी कंप्लेन करेंगे. फोन टैपिंग का इंसिडेंट तो जिनको ममता बनर्जी ने फोन किया है उसी ने ये फोन ऑडियो रिलीज किया है. फोन टैपिंग का तो दूसरा कोई तो किया नहीं होगा. तो ऑडियो जो रिलीज किया है वो तो उनके कार्यकर्ता प्रेसिडेंट है वहाँ का, शीतलकुची का. तो ये तो ममता बनर्जी को ब्लेम लगाने की बात है, लगा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये टैपिंग का काम ममता बनर्जी. नहीं, अगर हम आज की बात करें, कमर हाथी की भी बात करें, नॉर्थ 24 परगनास में, वहां पर भी मदन मित्रा आज सुबह से वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें जाने नहीं दे रही कहीं पर भी. उनका राइट है, जहां तक अगर वो सुपरवाइज करें वहां के पोलिंग बूथ, उन्हें जानबूझ के रोका जा रहा है. उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है, बिना मतलब का, बिना कोई इंसिडेंट का कोई भी जो कैंडिडेट होता है या इलेक्शन एजेंट होता है वो जात भीतर एंट्री नहीं कर पाते हैं और इलेक्शन एजेंट जाते हैं. चूंकि वोटर को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस रूल को लगा के रखा है कि जाते हैं भी तो तुरंत निकल जाते हैं. और मदन मित्रा क्या करते हैं कि वहाँ जाके अपना नाटक फैलाते हैं. 10 आदमी उनके सिक्योरिटी वाले को लेकर रुकेंगे, तो इसलिए उनको पैरामिलिट्री ने रोका होगा. ये तो रूल्स के अंदर में है. ममता बनर्जी 2 घंटा जाके बैठ गई बूथ में. ये कभी नियम में है ही नहीं, लेकिन वो बैठ गई थी. तो सब कोई तो ममता बनर्जी है नहीं, मदन मित्रा को रोक दिया होगा. चलिए, अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड अनिर्बान, as far as that video is concerned, because we are continuously playing out here on Republic, just take out a little time to see that video of the incident where the TMC worker can actually be seen grabbing the shirt allegedly of the BJP polling agent, asking him that where he was going and demanding to know why he took the money from the state government during last year's cyclone Amphan. What happened to the state disaster relief that was provided by the central government there? Just take a look at that incident video, because we have to slip into a short break that will give you enough time. We continue with our broadcast.